स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। So how are you all doing? So this is the third lecture in the series of Master CSAT through PYQs. So we are getting kind of नहीं होता है कि different students they kind of ask questions also. Telegram पे तो बड़ा अच्छा लगता है when they ask different questions. So now here all of you today one very important lesson. अब आज ना one different lesson, देखो हर एक क्लास में I am just focusing on different lesson which is important for the exam. One of the important lesson of today's lecture is that many a time it happens that you start the question, first question you come across and you don't get the idea how to solve the question. आता है आपको questions देखते हो, you don't get the idea, then all of you confusion है, clarity है. देखो it is always important to start on a positive note. जैसे क्रिकेट मैच में कहते हैं ना कि अच्छी स्टार्ट की ज़रूरत होती है, तो जैसे क्रिकेट में अच्छे स्टार्ट की ज़रूरत है वैसे ही सीसैट में भी पॉजिटिव अच्छे स्टार्ट की ज़रूरत है. तो अब इसमें क्या होता है कि कई बार, अब ध्यान देना, यू मस्ट हैव सीन इन क्रिकेट कि अगर पिच में मूवमेंट बहुत है, बाउंसी पिच है, तो बैट्समैन क्या करते हैं, दे चेक, दे काइंड ऑफ डोंट अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, दे लीव द बॉल. आपको जो है वो बॉल वहाँ पे लीव भी करते हैं, वो अटेम्प्ट नहीं करते हैं शॉट्स, पिच की मूवमेंट देखते हैं. सो हियर ऑल्सो ऑल ऑफ यू रिमेंबर कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जैसे क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप अटेम्प्ट करो, यू लीव द क्वेश्चन, switch to another question, switch to another question. And now the moment you switch to the next question, now here when you switch to the question, then now it seems that this question seems to be simple, easy. The moment this question seems to be simple and easy, तो immediately आप क्या करते हो, now yes you think that let me try this question first, let me try this question first. Are you all getting the point? So instead of attempting, देखो करेंगे discuss we will, but we'll start with the easy question. So start with the easy questions. So 0 is written as CHUR. So 0, Z is what? If we talk about the position, so alphabetical position, Z is 26th, E is 5th letter, 5th alphabet, then R is 18. अब देखो here you must remember few positions आपको याद रहनी चाहिए. A is the first one, E is the 5th one, then J is the 10th one. तो A है first, E 5th है, J 10th है, M 13th है, middle नहीं होता है. If you want M remember 13th या फिर remember O is 15th, T is 20th and the last one is 26th. ये 26 अल्फाबेट्स में फ्यू पोजीशंस यू रिमेंबर कि उसके आसपास इमीडिएटली यू कैन रिकॉल पोजीशंस. ओके, इज इट क्लियर? तो Z आपको पता, लास्ट 26 आप याद रखना, T 20th. सो फ्यू पोजीशंस कीप इन माइंड. ओके, O 15th पोजीशन. अब यहाँ पे हियर इन दिस केस C 3rd. सो इन अल्फाबेटिकल सीरीज ऑल ऑफ यू व्हाट हैपेंस दैट वी टेक इट इन सर्कुलर मैनर. That is, it starts with A, B, C like this. It ends on Z. It ends on Z. After Z, again आपका क्या आ जाता है? A. Again, B, C, D. It is continued in the same manner. So all of you see here, H 8th, 21. अब देखो, अब यहाँ पे R 18. So immediately what you see? +3 अब 0 के बाद यानी कि +3 1 2 3 5 8 18 21 15 18. so it becomes so easy. so player, all of you, अब देखो player में here in this case important P. so अब all of you, now the moment it is clear ना आपका, so instead of now writing the numbers, E है तो FGH था, R है तो STU है, O है PQR. So immediately in the same manner, क्योंकि आपको टाइम भी सेव करना है, so immediately P QRS.
L M N O, A B C D, S O D, S O D. Now here S O D, R S T U, U. अब देखो नाउ ऑल ऑफ यू बी ए कॉमन है तो हम लोग बी यहां चेक ही नहीं करेंगे. ई E F G H H. So now here in this case S O D, and this one will be definitely B, S O D B H U, S O D B H U. Is it clear to all? So S O D B H U, this will be the answer. अब यहाँ पे shortcut देखो, all of you just look at the shortcut. The moment you know Z A B C E F G H R S T U and then O P Q R, जैसे the immediately now you know that here the code, we say ना this is the question of coding decoding. तो in this case आपका concept कहाँ से आया? code का, each letter is replaced by 3 ahead. So in this one player also, in this one each alphabet will be replaced by your 3 alphabet ahead of it. तो अब यहां पे ध्यान देना ऑल ऑफ यू, शॉर्टकट क्या है? ई आर, ई आर, ई आर वी नो एच यू, ई आर वी नो एच यू. तो यहां पे भी क्या है? ई आर, ऑल ऑफ यू एच यू. वाओ, ई आर एच यू, वी हैव गॉट एच यू. डायरेक्टली यू कैन मार्क डी एज द आंसर. क्लियर? सो शॉर्टकट है Z E R O, all of you. So in this question E R H U. So here also E R H U and H U, last two H U, only one of the option is H U. Clear? Now all of you here in this case, question number 3, consider the following statements, and then A is older than B, C and D are of same age, E is the youngest, F is younger than D, F is older than A. How many statements given above are required to determine the oldest person or persons? So now all of you here, if we just go through the statement, so fast start expressing the questions numerically. A is older than B, A is older than B, C and D are of same age, C and D are of same age, E is the youngest, E is the youngest, so E is youngest, F is younger than D, F is younger than D, so F is younger than D, so F is younger than D, okay. F is older than A, F is older than A, so F is older than A. देखो now all of you here, अब ध्यान से देखना. In this case, question how many statements given above are required to determine the oldest person. Now in this case, oldest person determine, youngest person रहता तो only third statement would be sufficient. E is the youngest person. One statement would have been sufficient. But in order to determine oldest person, all of you, you require relation of F with respect to A also, with respect to D, C and D. E is the youngest, so E is not required. All of you, this is not required. A is older than B, C and D are of same age. So here this one is sufficient. So all of you यहाँ पे, here in this case this one B, and then the moment you are getting this as well as you are getting E is the youngest. अब याद रखना E is the youngest is important because E nowhere relation is given. So to determine who is the oldest person, so all of you, all 5 statements are required. All 5 are required. Is it clear? Namaste Rohit. So all 5 statements are required. Is it clear? So F relation with A given another place, F relation with D given another place, D and C given another place, A and B given in one, and E also overall given in one. So definitely all are required. Consider the following including the questions,
and the statement. There are 5 members A, B, C, D in a family. What is the relation of E to B? E to B. Which one of the following? You have to find out the relation of E to B. अब आपको relation find out करना है E to B. So now all of you have to check all 4 statements together sufficient to answer the question. All 4 statements are not sufficient. Statement 1, 3 and 4 sufficient. Statement 1, 2 and 3 sufficient. Okay. B question is specific. You have to find out the relation of E to B. E to B, A and B are married couple. So first statement, A and B are married couple. A and B are married couple. Second statement, D is father of C. D is father of C. D is father of C. Okay. E is D's son. E is D's son. E is D's son. A and C are sisters. A and C are sisters. A and C are sisters. Now A and C are sisters. A and C are sisters. Now all of you here, question है, which one of the following is correct in respect of the, you have to find out the relation of E to B. अब ध्यान से E and B relation you have to find out. E and B relation you have to find out. So E and B relation, B and A relation, because B and E no direct relation is given. And remember, E is D's son and A and C are sisters. This is also required because A, then only you will find out the relation of A to B, and then B to C. This whole can be used. A and C are what? Your sisters. So all of you in this case, definitely all the 4 statements are required. 1, 2 and 3 will not be sufficient together. 1, 3 and 4 will be also not sufficient. Okay. So here in this case, all of you, all 4 statements are required. I hope it is clear to all. देखो this, now all of you look at question number 5th. Question number 5th again. Sometimes we say na that if you are preparing for UPSC CSAT में अगर आपको kind of नहीं होता है, certainty लानी है, तो calculation speed आपको improve करना पड़ेगा. As well as all of you, what you need to focus on, अब किस पे focus करना है strictly. You need to focus strictly on the what? Squares, cubes, prime numbers. अब कैसे? आपको first of all tables, you must remember the tables till 20. 20 तक tables आपके याद रहने चाहिए. Squares of the numbers, you must remember the squares of the numbers till 30, 35. Cubes of the numbers, you must remember the cubes of the numbers till 12. यानी ऐसा याद रहना चाहिए ना कि आपको डेफिनेटली देखते ही क्लियर हो जाए नंबर कि यस इज इट अ क्यूब. 512, if 512 is 512 a cube? Yes, 8 into 8 into 8, 512. 8 cube is 512. So ऐसे क्लैरिटी रहनी चाहिए. Okay. Now here similarly prime numbers. All of you, prime numbers का एक concept होता है. The concept of prime, you must first have the idea. Prime numbers have exactly 2 factors. अब prime numbers have exactly 2 factors. Then एक बार तो mind में clarity लेते ही आओ कि what are the prime numbers till 100. 100 तक all of you, what are the prime numbers? क्या क्या prime numbers है? So just go through the prime numbers till 100. Second concept important here. In this case, when you look at the numbers now, 17, 37, 47, 97. So different from others. So at least 17 you know कि हाँ 17 आपका क्या prime number है. 37 it is also prime number. You look at the other set of numbers 31, 41. So all number here seems odd number and all number seems that yes they are not kind of नहीं होता है divisible, common divisible numbers. So now all of you look at
सो अब ये क्लियर हो गया कि डेफिनेटली दिस इज अ काइंड ऑफ व्हाट, योर ग्रुप ऑफ प्राइम नंबर्स. ये भी दिस इज अ ग्रुप ऑफ प्राइम नंबर्स, दिस इज अ ग्रुप ऑफ प्राइम नंबर, दिस इज अ, choose the group which is different from other. So now choose the group. So here if you remember the table of 13, if you remember the table of 13, 91, देखो 91 ऐसा नंबर है ना कि many a times in calculation, if you have done calculation, it strikes 13 into 791, 13 into 791, 13 into 791. So immediately yes, this 91 is not a prime number, except this all the numbers are what, prime numbers. So आपका immediately क्या हो जाएगा, this number you can discard. The moment you look at the number, अब यहाँ पे वही calculation technique होती है आपकी. Look at the numbers, after observing the numbers it becomes clear कि हाँ ये prime numbers का ही group लग रहा है. And then here 91 is not a prime number. All of you remember one trick I am also giving you all, how to identify whether a number is a prime number or not. 97 is a number. If you have to check whether it is a prime number, so just tell me what will be the square root of 97. 9 square is 81, 10 square is 100. So iska square root of 97, square root of 97 will be what, 9 point something. Now what are the prime numbers lesser than 9? 9 से lesser prime numbers क्या हैं? 2, 3, 5, 7. These are the prime numbers lesser than 9. Now if 97 is divisible by any of them, किसी से भी divisible होगा, then 97 will not be a prime number, क्योंकि divisible हो गया तो फिर कहाँ से prime number. If 97 is not divisible by any of these prime numbers, then definitely 97 will be a prime number. याद रखना, ये बड़ा important है. So 2 से divisible नहीं है, 3 से divisible 9 plus 7 16, no. 5 से definitely not, 7 से definitely not, 7 into 13 91, 7 into 14 98. So if it is not divisible by 2, 3, 5 and 7, definitely it will be a prime number. तो ये one of the easy way होता है to identify whether a number is a prime number or not. Square root लो and then the prime numbers lesser than it. All of you, अब देखो this question number 6, ये बड़ा मतलब नहीं होता है, कुछ questions देख के बड़ा अच्छा फील होता है. Why अच्छा फील होता है कि here in this question UPSC is checking your core concept. Believe me, ये आपका एकदम जो basic concept है ना, ये check कर रही है. Therefore to students also I always ask कि ज़्यादा formula shortcuts tricks के चक्कर में मत पढ़ना, basic concept understanding clear करो. क्योंकि इस केस में अगर आपके अंडरस्टैंडिंग क्लियर है ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, यू कैन रीड द क्वेश्चन ओरली ओनली, यू कैन काइंड ऑफ नहीं होता है, डू द कैलकुलेशन, जस्ट कंपैरिजन एंड यू कैन मार्क द आंसर. मतलब 30 सेकेंड से 1 मिनट, 1 मिनट में यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, 1 मिनट में यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन करेक्टली इफ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर. देखो कैसे, a principal P becomes Q in 1 year when compounded half yearly with R% annual rate of interest. If the same principal P becomes Q in 1 year when compounded annually with S% annual rate of interest, then which one of the following is correct? Principal P becomes Q, time period है 1 year, compounded half yearly, R% CI compounded half yearly, compounded half yearly. यहां पे P becomes Q, rate of interest is S%, okay, here compounded annually, here also time period is 1 year, time period is 1 year. अब देखो both places all of you time period is 1 year, then अब ध्यान देना प्रिंसिपल P है both places, यानी प्रिंसिपल at both places is equal, amount at both places is equal, यानी सेम प्रिंसिपल था, अमाउंट भी सेम है.
At one place rate of interest is R% compounded semi annually, यानी 6 months पे आपको कंपाउंड हुआ है. At one place it is compounded annually, यानी after 1 year only it is compounded. तो अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है ऑल ऑफ यू. कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अमाउंट एक्ट्स एज द प्रिंसिपल. इफ इट इज कंपाउंडेड एनुअली तो आफ्टर 1 year अमाउंट विल एक्ट एज प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर. Amount after second year acts as the principal for the third year. Amount after third year acts as the principal for fourth year and so on. Similarly, आपका इसमें here in this case compounded semi annually means what? अब आपका जो principal है 6 months तक रहेगा. After 6 months that amount will act as the principal for next 6 months. Then again after 1 year again it will be compounded, any amount that interest will be added, and then that amount will act as the principal for the next 6 months and so on. अब देखो all of you simple सा concept है. Amount is always greater than the principal. Amount is always greater than the principal. अब यहां पे ध्यान देना, P is the principal. It remains same for 1 year and you get the amount Q. Here P is the principal. It will remain for 6 months and after 6 months आपका क्या हो जाएगा, amount will act as the principal for next 6 months. Definitely amount after 6 months will be more than the principal. अब amount after 6 months is more than the principal, यानी amount ज़्यादा है, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट यू आर चार्जिंग, एंड देन एंड में आपका ओवरऑल अमाउंट क्या आया, सेम आया. सो अब यहां पे एक बात बताओ, यहां पे 6 मंथ्स के बाद तो अमाउंट वर्क कर रहा है. अमाउंट डेफिनेटली आपको ग्रेटर होगा प्रिंसिपल से. अमाउंट आफ्टर 6 मंथ्स इज ग्रेटर देन द प्रिंसिपल, बट अमाउंट आफ्टर 1 year इज इक्वल. ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इट कैन बी ओनली पॉसिबल व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट हियर विल बी व्हाट, लेस देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट हियर. R% विल बी लेस देन S%. R इज लेस देन S. अमाउंट तो ग्रेटर है बट ओवरऑल अमाउंट आफ्टर 6 months, यहां पे आफ्टर 6 months प्रिंसिपल है, यहां आफ्टर 6 months अमाउंट आफ्टर 6 months है, बट अमाउंट आफ्टर 1 year इक्वल. अमाउंट आफ्टर 6 months ग्रेटर but amount after 1 year equal. How it can be possible? It can be only possible when rate of interest here will be what, lesser. यहाँ rate of interest ज़्यादा होगा तभी overall amount क्या हो जाएगा, इसके equal हो गया. कम प्रिंसिपल में भी अमाउंट अगर इक्वल करना है तो कैसे होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा, more rate of interest definitely overall amount. तो ये तो क्वेश्चन, यू रीड द क्वेश्चन. प्रिंसिपल P becomes Q 1 year compounded half yearly. P becomes Q 1 year when compounded annually. Which one of the following? Compounded half yearly na. Definitely here amount will be more and then overall amount is same. Definitely rate of interest compounded semi annually will be less than rate of interest compounded annually. खत्म हो गया क्वेश्चन. पढ़ो क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट विजुअलाइज, आर द आंसर. How many natural numbers are there which gives a remainder of 31 when 1186 is divided by these natural numbers? How many natural numbers are there which gives a remainder 31 when 1186 is divided by them? 1186 आपका divide हो रहा है. Many of you are watching also. Just tell me what answer?
So all of you tell me fast. Natural numbers are there which gives a remainder of 31 when 1186 is divided. अब देखो 1186 आपको डिवाइड हो रहा है, ध्यान से देखना. 1186 is divided by these natural numbers. आपको नेचुरल नंबर x से डिवाइड कर रहा हो, रिमाइंडर यू आर गेटिंग 31. देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका क्या है, कॉन्सेप्ट है सिंपली दैट ऑफ योर रिमाइंडर एंड फैक्टर. 1186 when it is divided you are getting remainder 31. तो अब सिंपली बताओ, it means 1186 minus 31, 1155 must be perfectly divisible. 1155 must be perfectly divisible. So all of you, 1155 must be perfectly divisible. So 1155 को express it in terms of factors. All of you, जल्दी से 1155 how can you express it in terms of factors? अब यहाँ पे अब ध्यान देना, 1155 है ना, तो ये डेफिनेटली क्लियर है कि 11 से डिविजिबल है, इतना तो क्लियर है ना कि सो 11 इंटू 1155 डिवाइड करो, यू गेट 101, 101 और 105, 105. So you are getting 1155. अब देखो 105, now all of you further divide. 105 is what? 15 into 7. 15 into 7. 15 into 7. 15 you can divide it as 3 into 5. So now all of you 1155 prime factors, what you are getting? 3 into 5 into 7 into 11. 1155 basically आपका क्या है? 1155 is 3 into 5 into 7 into 11. अब यहाँ ध्यान देना all of you. अब ये important है. Any number if you divide kind of नहीं होता है कि how many natural numbers are there. अब कितने natural numbers होंगे? Okay, which gives a remainder when 1186 is divided by these natural numbers. So 1155 के आपको क्या है? ये factors हैं. It means 1155 perfectly divisible होगा. तो perfectly divisible means 1155 will give you remainder 0. So whatever remainder you want, you add that much. तो आप remainder add कर दो. तो आप remainder add कर दो तो ऐसे जितने factors होंगे सारे. But यहाँ पे catch है that the divisor cannot be greater than the remainder ना. Greater or lesser, divisor cannot be. आपको डेफिनेटली यहाँ पे डिवाइजर आपका 11 डिवाइजर हो, 13 रिमाइंडर आ सकता है क्या? सो रिमाइंडर रिमेंबर कैन नॉट बी ग्रेटर देन द डिवाइजर. ध्यान से सुन लो, रिमाइंडर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी ग्रेटर देन द डिवाइजर. किसी नंबर को 4 से डिवाइड करो, आपका रिमाइंडर 6 आ सकता है क्या? नहीं ना. सो अब यहाँ पे ध्यान देना, व्हाट विल बी द फैक्टर्स? 3 into 5 15, no. 3 into 7 21, no. 3 into 11 33, yes. One number you get, one factor. Up 33 is greater than 31, so yes, 33 will be one number. 1186 when you divide by 33 you will get remainder 31. Similarly 5 into 7 35, 5 into 7 35, 5 into 11 55, 5 into 11 55. I am first taking just two numbers, हमेशा ही ध्यान देना. Then next है आपका 7 into 11 77. Next है 7 into 11 77. This number I have got. Then all of you, what will be the other numbers? 2 के आप I have got these many. Just 5 into 7, 5 into 11 also. 5 into 7 हो गया आपको, 3 into 11 33, 5 into 7 5 into 11 and 7 into 11 30. अब 3 into 5 into 7, 3 into 5 into 7, 3 into 5 into 11, 3 into 7 into 11. All these numbers आपको याद रखना. देखो I am just explaining in detail. We don't have to find the numbers, but we are just explaining in detail. Now these numbers definitely when you
will multiply, तो आपको क्या होगा कि when you will divide 1186 by these numbers, whatever number you will get now, 35 into 3 105, definitely you will get remainder 31. When you will divide, definitely you will get this remainder. Then all of you, what can be the other number? What other number? 5 into 7 into 11, and one of the number can be what? 3 into 5 into 7 into 11, that is 1155 only. So 1186 को आप 1155 से divide करो, what remainder you get? Definitely you get remainder 31. So कितने ऐसे natural numbers होंगे? So all of you, we are getting here 4 plus 4 8 plus 1 9, definitely we are getting 9 natural numbers. So we are getting 9 natural numbers. Is it clear? So there will be 9 natural numbers which will divide 1186, leaving remainder 31. Again I am just repeating the concept. अब देखो एग्जाम में कैसे करना है, जल्दी जल्दी fast. How many natural numbers are there which gives a remainder of 31 when 1186 is divided by these natural numbers? So remainder 31, so 1186 minus 31, that is 1155 will be perfectly divisible. 1155 will be always perfectly divisible by its factors. So अब factors when we express it, so 11 into 105, so here 11 into 3 into 5 into 7, 11 into 7 into 3 into 5 in factor form. Now the combination of all those factors will be the factors के combination जो होंगे ना, they will be also what? Perfectly dividing 1155, perfectly dividing 1155, as well as now we know कि आपको remainder यहाँ पे it is not asking how many factors हैं, वरना डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लगा देते टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का. बट देखिए यही ना यूपीएससी स्मार्टली खेल रही है, दे आर नॉट आस्किंग हाउ मेनी फैक्टर्स हियर, तो इस फैक्टर्स फाइंड आउट करना रखता तो डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला a टू द पावर b, p into b to the power q into c to the power, so the p plus 1 into q plus 1 into r plus 1 up number of factors, but here remainder 31. तो आपको you have to consider only those factors which will be what? Greater than 31. तो greater than 31 कौन से factors होंगे? 3 into 5 नहीं, 3 into 7 नहीं, 3 into 11 33, yes. Then 5 into 7, yes, 5 into 11, yes, 11 into 7, yes, and then combination of 3, 3 5 7, 3 7 11, 3 5 11, 5 7 11, and then 1 combination of all 4 these numbers. I hope it is clear to all now. So total 9 numbers we will be getting. So all of you here, what is sum of all the 4-digit numbers less than 2000 formed by the digits 1 2 3 and 4 where none of the digit is repeated? So all of you, how can we solve these questions? So this question again I will take it in the end. अब देखो यही है, ठीक है, अभी ये क्वेश्चन है, कैलकुलेशन अभी दिमाग, so I'll just take it, skip कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, skip. So now here number of selections of 10 consecutive things out of 12 things in a circle taken in a clockwise direction. Okay. Last question here. If today is Sunday, then which day is it exactly on 10 to the power 10th day? Today is Sunday, which day is it on 10 to the power 10th day? So all of you have to find out exactly which day is on 10 to the power 10th day. So Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. अब देखो all of you, अब याद रखना here in this case simple सा concept है ना, 7 days forms a week, 7 days forms a week. So after 1 week you get exactly same day. जैसे for example today is Saturday, so after 1 week, that is after 7 days, again we get Saturday. Then again after 7 days further we get Saturday, again we get 7 days further we get Saturday. So if I ask you all what will be 25 days from today, so 25 days में how many weeks will pass, that will be irrelevant. So 25 you divide by what? 7. So 25 you divide by 7, 7 into 3, so 3 is the quotient, so definitely 3 weeks will pass. So 3 weeks pass हो जाएंगे तो आपको 3 weeks is irrelevant. Remainder क्या आया? 4.
So आपको normal understanding के लिए I am telling. So 25 days, what will be 25 days from today? So 3 weeks ये irrelevant है, 4 days यही odd days का concept है सारा. This is the entire concept of odd days, that whatever will be 4 days from today, same. So Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. So similarly will be the 25th day from today. I hope it is clear. So now when we have to find out which day is it exactly on 10 to the power 10th day. So we have to find out which day is it exactly on 10th to the power 10th day. So here what we do, all of you, 10 to the power 10th day, 10 to the power 10th. So 10 to the power 10th आपको you have to find out. So you need to divide by 7. You need to divide by 7. You need to find out what will be the remainder. What will be the remainder? अब 10 to the power 10 को all of you, अब देखो remainder theorem का ये concept है, all of you. Here we can solve this question by two different ways. Here we can solve this question by two different ways. Either you can find out the remainder. अब ऐसा concept क्या होता है, 10 you divide by 7 ना, if 10 we have to divide by 7, so what we can write down, we can write down it as 7 plus 3 by 7. So 7 by 7 remainder will be what, 0 plus 3 divided by 7. So 3 divided by 7, so all of you 3 divided by 7, so 3 divided by 7 remainder we get what, 3. So here also remainder will be 3. So 10 to the power 10, 10 to the power 10. So here what we can do, all of you, one of the method is that we find out the actual remainder 10 to the power. So 10 to the power, all of you, just you find out what remainder we get. Do we get any kind of here pattern? अब देखो सबसे important क्या होता है, सबसे important है all of you pattern देखना. You have to always look for the pattern. So all of you check fast. Those of you who are watching online, are we getting any pattern here? अब देखो all of you, 10 to the power 1 divide by 7, remainder is 3. 100. अब देखो all of you just remember pattern check करना है आपको. जनरल मेथड फर्स्ट आई एम गिविंग यू ऑल द जनरल मेथड. ओके, आपको जनरल मेथड इंपॉर्टेंट है. 100 you divide by 7, so 100 you divide by 7, so here 14, 98, remainder is 2, so remainder 2. Now all of you here 20. अब आगे just remainder find out करना है. So remainder is 6. 10 to the power 3 में remainder is 6. Now then again 0, 0, 7 into 8, 56, remainder is 4, remainder is 4, then 0, remainder is 5, then again 50. अब ध्यान देना 50, अब 50 के बाद 49, रिमाइंडर इज 1. 10 to the power 4 आपको 4 था, देन 10 to the power 5, रिमाइंडर इज 5. 10 to the power 6, remainder, all of you, 10 to the power 6, again what remainder you are getting? You are getting remainder 1. अब जैसे 10 to the power 6 में remainder 1 आया, अब यहाँ पे ध्यान देना all of you, अब यहाँ पे डिवीजन अगेन सेम मैनर में हो जाएगा. सेम ऑल ऑफ यू, अगेन आपका डिवीजन विल बी सेम मैनर. तो यानी 10 to the power 7, अगेन आपका रिमाइंडर विल बी व्हाट 3.
10 to the power 8, again remainder will be what, 2. 10 to the power 9, again remainder will be 6. 10 to the power 10, again remainder will be 4. So now all of you यहाँ पे याद रखना, just keep in mind that number of यहाँ पे remainder, so 10 to the power 10 when you divide na, all of you 10 to the power 10 when you will divide by 7, remainder will be what, 4. So remainder will be 4, it means whatever will be 4th day from today, that will be the answer. So 4th day from today, that is यहाँ पे Sunday है today, याद रखना एग्जाम वैसे भी संडे को ही होता है आपको, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे. So what is the answer? Thursday. What is the answer? Thursday. I hope it is clear to all. So all of you just remember, ये याद रखना, remainder here, then again after this in exam whenever you get such question ना, so all of you यहाँ पे ध्यान रखना कि again ये pattern based question है. This time UPSC checked the question ना, तो यहाँ पे लंबा pattern दिया था, मतलब they here you are getting pattern only after say Ali, I am not getting your question. Ali, I am just saying आप ये 10 to the power 10th day है ना, so 10 to the power ऐसे आप 10 divide करो, you will get here remainder 3. 10 square 100 you divide, remainder 2. 1000 you divide, you get remainder 6. 10,000 you divide, remainder 4. 10 to the power 5, 1 lakh you divide, you get remainder 5. 10 to the power 6 you divide, you get remainder 1. And then after that again 10 to the power 7 में remainder 3. So अब आपको यहीं से जैसे 10 to the power 7 remainder 3, तो आपको same cycle will repeat. So 10 to the power 8, 10 to the power 9, 10 to the power 10. So 10 to the power 10, 4 remainder. It means देखो सारा खेल है रिमाइंडर का, that is odd days. Number of weeks which pass they are irrelevant. Week से मतलब ही नहीं हमें, हमें मतलब है किससे, odd days से. So odd day we are getting how much, 4 odd days. So 4 odd days we are getting, so Sunday से whatever will be 4th day, that will be the answer. अब आते हैं नंबर ऑफ selections of 10 consecutive things out of 12 things in a circle taken in a clockwise direction. तो अब एक काम को पता है क्या, इस टाइप के क्वेश्चन में ना ऑल ऑफ यू मैक्सिमम स्टूडेंट्स व्हाट दे डू, दे स्टार्ट अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट. क्या लगाना है, एनपीआर लगाना है, एनसीआर लगाना है, ऑल ऑफ यू. अब ध्यान देना यहाँ पे, बेस्ट अप्रोचेस यू ड्रॉ अ सर्किल, 12 थिंग्स है ना, ये है. तो अब इसको C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11 एंड C12. 10 कर दिए. अब ध्यान देना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑल ऑफ यू हाउ मेनी वेज, 10 consecutive things out of 12 things be taken in a clockwise direction.
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एक क्या कर सकते हो, C1 to C10, 10 consecutive things you have to select, C2 to C11, C3 to C12, C4 to C1, C4 to C1, देखो बिकॉज अलग अलग आपका कॉम्बिनेशन है, C5 to C2, C6, C7, C8, C9 से 10, C10 से 10, C11 से 10 एंड C12 से 10। आफ्टर दैट तो फिर आप C1 पे ही आ ही गए। सो ऑल ऑफ यू अब ध्यान देना, बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या एक्सप्लेन कर रहा था, हाउ मेनी वेज यू कैन सेलेक्ट 10 कंसेक्यूटिव थिंग, C1 to C10, C2 to C11, C3 से लेके अब C1 से लेके नेक्स्ट यानी कि नहीं होता नेक्स्ट 9, सो C1 to C10, C2 से लेके C3 से लेके C4 से लेके C5 से लेके C6 से C7 से C8 C9 C10 C11 C12, सो अपने हर एक को पहला मान के नेक्स्ट 9, पहला मान के नेक्स्ट 9, पहला मान के नेक्स्ट 9, तो कितने पहले सेलेक्ट हो जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि सिर्फ क्लॉकवाइज में करना है, अगर एंटी क्लॉकवाइज भी रहता तो ऐसे भी कर लेते ना, C1 C12 ऐसे करके नहीं, सिर्फ क्लॉकवाइज करना है। तो इस डायरेक्शन में C1 से आपको C10 तक, C2 से C11 सिर्फ ऐसे करके, तो कितने आपको हेड मिल रहे हैं, C1 C2 C3 आपको C12 12 हेड मिल रहे हैं। तो अब इन 12 हेड के साथ नेक्स्ट 9 9 आप कर सकते हैं, तो कितने वेज में हो जाएगा, 12 वेज। सो ऑल ऑफ यू जस्ट रिमेंबर हाउ मेनी वेज, 12 वेज। क्लियर? तब जितने नंबर ऑफ सिलेक्शंस आप कर सकते हो, हाउ मेनी वेज यू कैन सेलेक्ट 10 consecutive, सो दैट इज द आंसर। Question number 8th, अब देखो, what is the sum of all 4 digit numbers less than 2000 formed by the digits 1 2 3 4 where none of the digit is repeated? अब none of the digit is repeated, all the numbers are less than 2000, 4 digit number ही है, less than 2000 है, less than 2000 है, 4 digit numbers formed by digit 1 2 3 4 और all the digits are less than 2000, यानी कि definitely all the digits will begin with 1। अब बिगिनिंग विथ 1 विथ डिजिट्स 1 2 3 4 क्या क्या नंबर हो सकते हैं, आपको रिपीटिशन नॉट अलाउड, नन ऑफ द डिजिट, सो आपको 1 2 3 4 1 2 4 3, सो अब जितने नंबर्स हैं ऑल ऑफ यू जस्ट सी 1 3 2 4 1 3 4 2 देन 1 4 2 3 1 4 3 2, These will be the only numbers which will be formed। इसके अलावा और कोई नंबर फॉर्म होगा नहीं होगा। सब जितने भी नंबर ये फॉर्म हो रहे हैं सब में ऑल ऑफ यू व्हाट विल बी, देखो जस्ट चेक सम ऑफ द डिजिट। अब देखो यहाँ पे देख लो ये 6 है ना, यहाँ से कैरी मैक्सिमम 1 ही आएगा, तो आपको क्या हो जाएगा 7 9 9 8 7 9 9 8, these are the numbers। So all of you, I hope it is clear now।
Is it clear to all of you? So we will take now the last question of the day, that is the first question. Now all of you, this is one very important question, therefore I am taking in the end. Fresh mind सब question देखना. A box contain 14 black balls, 20 blue balls, 26 green balls, 28 yellow balls, 38 red balls and 54 white balls. Consider the following statement. The smallest number n such that any n balls drawn from the box randomly must contain one full group of at least one color is 175. अब देखो आपको टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, आपको कितने ग्रुप्स हैं, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, 5 ग्रुप एंड 6 ग्रुप्स. देयर आर 6 ग्रुप्स. अब 6 ग्रुप्स हैं ऑल ऑफ यू. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, अब जस्ट काउंट कर लो. 14 प्लस 20 प्लस 26 प्लस 28 प्लस 38 प्लस 54. सो आपका 14, 20, 34, 26, 60 प्लस 28, 88 and 38, 126 plus 54, so 180 balls है. अब ध्यान देना ऑल ऑफ यू, अब ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है. कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर n सच दैट ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स मस्ट कंटेन वन फुल ग्रुप ऑफ एटलीस्ट वन कलर. वन फुल ग्रुप ऑफ एटलीस्ट वन कलर, यानी वन फुल ग्रुप ऑफ एटलीस्ट वन कलर, यानी आपको क्या होना चाहिए, फुल ग्रुप ऑफ एटलीस्ट वन कलर. सो टोटल आपके पास अगर 180 बॉल्स है ना, तो उसमें से आप 5 आप डिफरेंट ग्रुप्स के बॉल्स आप सब्ट्रैक्ट कर दो. 5 डिफरेंट ग्रुप के बॉल्स आप सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट इज 175 बॉल्स. नाउ इफ यू आर टेकिंग 175 बॉल्स, तो दिस 175 बॉल्स विल कंटेन वन फुल ग्रुप ऑफ एटलीस्ट वन कलर. क्योंकि आपको 6 ग्रुप्स बन रहा है, तो 6 ग्रुप्स में से आप ऑल ऑफ यू जस्ट वन बॉल ऑफ 5 ग्रुप्स. तो अब आपका 175 बॉल्स व्हेन यू विल हैव ना, तो डेफिनेटली यू विल हैव व्हाट, योर वन फुल ग्रुप ऑफ एटलीस्ट वन कलर. आपका वन फुल ग्रुप डेफिनेटली रहेगा ऑफ एटलीस्ट वन कलर. अब नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट नंबर m सच दैट एनी m balls drawn from the box randomly must contain at least one ball of each color is 167. अब इस केस में क्या कह रहा है ना, वन बॉल. अब ग्रुप की बात नहीं है कि आपको पूरा ग्रुप होना चाहिए 14 का ऐसे ग्रुप का. इट इज टॉकिंग ओनली अबाउट वन बॉल. नाउ ओनली अबाउट वन बॉल. सो नाउ हियर इन दिस केस ऑल ऑफ यू रिमेंबर, अब ध्यान देना, here it means when you are picking ना, जैसे आप पिक कर रहे हो, तो you must have at least one ball of each color. so at least one ball of each color definite होने के लिए 54 white balls, 38 red balls. अब डेफिनेट के लिए हमेशा क्या करते हैं, हम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यहां लेते हैं कि डेफिनेट होना चाहिए. रेड, 28 ग्रीन, 26 सॉरी 28 येलो है, 28 येलो, 26 ग्रीन, 20 ब्लू प्लस 14 ब्लैक बॉल्स. अब सबसे कम बॉल्स किसके हैं, ब्लैक बॉल्स के ना. तो आप ये सेलेक्ट कर रहे हो, तो मानो फर्स्ट 54 बॉल्स ऑल वाइट. अरे आपके पास आए क्या, बॉल्स ऑफ ऑल कलर्स, नो. नेक्स्ट 38 बॉल्स ऑल रेड, 28 balls 26. तो ये कितने balls हो गए, when you sum them up you get 166 balls. so 166 balls will consist of ये. now if you pick 167th ball plus 1, 167th ball if you pick, so now definitely अब आपके पास क्या होंगे, you will have balls of at least one ball of each color.
you have at least one ball of each color. Is it clear? तो अब यहां पे कह रहा है एटलीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर, तो आपको 167 बॉल्स विल कंटेन एटलीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर. तो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स किसके हैं, 14 ब्लैक बॉल्स है ना, तो इसलिए आप 180 में से 14 सब्ट्रैक्ट करो, 166 प्लस 1, 167 बॉल्स अगर पिक कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली यू विल हैव एटलीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर. ये डेफिनेट होता है, हमेशा याद रखना. क्वेश्चन में इट इज आस्किंग मिनिमम नंबर, लेकिन है आपका क्या, ये डेफिनेट है. यहां पे आपको पूरे ग्रुप की बात कर रहा था कि एटलीस्ट नहीं होता है, आपका पूरा एक ग्रुप रहे, 14 ब्लैक बॉल्स का ही ग्रुप हो, या फिर 20 ब्लू बॉल्स का ग्रुप हो, या फिर 26 ग्रीन बॉल्स का ग्रुप हो, डेफिनेट ये ग्रुप होना चाहिए. इज इट क्लियर टू ऑल? सो देयरफॉर हियर बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट. ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज आप लोग ध्यान से देख लीजिए. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. So with this, all of you, today's kind of PYQs is over. So आज का आपका सेशन कंप्लीट हुआ. तो आज के सेशन में इंपॉर्टेंट लेसन क्या था, इंपॉर्टेंट लेसन था क्वेश्चंस मिले, लगे कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेंदी क्वेश्चन है, कॉम्प्रीहेंड करना डिफिकल्ट है, स्किप करो. सो हर एक लेक्चर में आई विल गिव यू वन इंपॉर्टेंट लेसन ऑल्सो. तो दिस वॉज दी टूडेज लेसन. सो आई होप विल काइंड ऑफ नहीं होता है कि विल इंक्रीज द number of sessions, also more questions will be including. So clarity आ गई. So all of you, see you all in the next session. Till then just keep watching. इतना डिटेल में इसलिए कर रहे हैं कि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, तो आप लोग इसको यूटिलाइज करो. ओके, ऑल ऑफ यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, टेक केयर, थैंक यू ऑल.